Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Welcome in your online English class. Dear student, in this video we are going to cover a grammar's topic which is noun. What is noun? A noun is a word. A noun is a word used to name a person, a place, a thing or an idea. Dear student, again we are going to read its definition. A noun is a word used to name a person, a place, a thing or an idea. So dear student, noun किसको कहते हैं? Noun ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि इस्तेमाल होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर किसी आइडिया के लिए। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है that will be noun. So dear student, a person name of a person हो, अरसलान हो, अहमद हो, its name. This person is not, but its name will be noun. Place. Dear student, here you see mountain. Mountain will be noun. Thing. Dear student, here you see a computer. So is it a noun? No, it is not noun, but its name, the computer, is noun. Dear student, here are kinds of noun. First is common noun. Say with me, common noun. Second is proper noun. Proper noun. Third is countable noun. Countable noun. Fourth is uncountable noun. Uncountable noun. Dear student, first is common noun. What is common noun? Common noun don't have any specific name of any person, place or anything. Dear student, common noun में किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का या फिर किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, बल्कि उसका नाम जो होगा वो कॉमन होगा. That will be called common noun. Here is example boy, school, book. यहाँ पर जो examples हैं इनका particular, इनका कोई specific नाम नहीं है. So that is called common noun. यहाँ पर आप बुक देख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी बुक है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल की, आपको पता नहीं चल रहा. If we will give its name English, then you will be definitely know this is English book, so that will be proper noun. So dear student, what is proper noun? Proper noun have a specific name of any person, place or anything. Dear student, जब उसका स्पेसिफिक नाम लिया जाएगा that will be called proper noun. Like इमरान खान. Dear student, आपको पता चल गया. अब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. But who is he? He is Imran Khan. Example of country. Which is country here I wrote? Yes, this is Pakistan. So dear student, there are many countries in the world. So, but if we will take any specific name of any country, that will be proper noun. Dear student, there are many bags. Bags तो बहुत सारे होते हैं. There are many bags. But यहाँ पर कौन सा है? Yes, school bag. So school bag will be proper noun. Now we are going to talk about countable noun. What is countable noun? Countable noun can be counted. डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन हम किसको कहते हैं? वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकें. लाइक एप्पल. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान में रखनी है कि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हम काउंटेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं. काउंट बट इन अनकाउंटेबल नाउन वी विल यूज़ ओनली सिंगुलर. बट इन काउंटेबल नाउन वी विल यूज़ सिंगुलर एंड ऑल्सो प्लूरल फॉर्म. Like an apple. An apple मतलब एक एप्पल. Then 2 apples. यहाँ पर हमने s यूज़ किया.
यहाँ एप्पल से, एक एप्पल से एप्पल्स बन गया, यानी कि ज़्यादा एप्पल बन गए, मोर देन 1। यहाँ पर हैं कितने हैं एप्पल्स, क्वांटिटी हमें बताई गई है 2 एप्पल्स, देन 3 एप्पल्स एक्सेट्रा। एंड देन अनकाउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट, ऐसे नाउन जो हम काउंट ना कर सकें, लाइक एयर। डियर स्टूडेंट, हैव यू एवर लिसन दिस वर्ड, 1 air, 2 air, 3 air? No, never ever you listen this word, but you only heard air. Rice. Dear student, क्या आपने कभी सुना है एक चावल, 2 चावल, 3 चावल? No, but it's only one is rice. Water. Dear student, वाटर के लिए भी आपने कभी ये नहीं सुना होगा एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर. Never ever you heard. You always heard 1 glass of water, 2 glass of water. Dear student, you will make a chart in your English rough copy. Write there common noun, proper noun, countable noun and uncountable noun. Dear student, जैसे आपको यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहा है, सेम वैसे ही आप अपने इंग्लिश रफ कॉपी में चार्ट बनाएंगे. Then you will write here common noun here I wrote boy. Here is boy. Proper noun is Ali. Countable noun 2 apples. Uncountable noun water. Student, send your homework in WhatsApp group. Hope you understood. Allah Hafiz.